आज का हम सेशन करते हैं। आज भी हम एक गेम बनाते हैं। आज का भी गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो मैं गेम ही बनवा रहा हूँ आई मैंने आपको बताया था इस गेम का मुझे बड़ा वो है शौक ना, तो मैं आपको गेम बनाने से पहले एक कुछ चीजें आज टिप्स भी बताता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ सेकंड पहले। लेट मी नो व्हेन यू सी माय स्क्रीन शेयर। यू कैन सी माय स्क्रीन राइट। जी सर, नजर। यस चलें भाई, सर, इट इज विजिबल। स्क्रैच प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं। Which one is mine? I'm the DaVinci Tech, huh? इसी थी मैं DaVinci Tech किसी पे लॉग इन होगा। या close that. Scratch. We just saw it कहाँ गई? Why is not coming? We तो आ रही थी। Beats here. There it is. Okay. So this is Scratch हमारी। Okay, so आज गेम बनाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, आई नो दिस इज आवर क्लास, जो हमारी लास्ट एज ए लास्ट क्लास है, बट इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप यू गाइस डू अ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के बेस पे फिर आप विल जज कि किसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। whoever gets me the best game, and that will be a game, अच्छा होगा कि आप गेम बनाए। you can do any project, but let's see who can get me the best project, and we do a sort of a competition. Everyone will get something, but if whoever get the best game, the gift for that person. Is that a good deal? Are you guys up to it? You guys will get 1 week for that. सही है? ओके सर। Okay, so for that मैं आपको जो टिप्स दूंगा वो आपने नोट करनी है। Do you have a notebook or something to write यस down? सर, Maybe even a note. मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। मुझे मुझे लग रहा था आज नोट लेने पड़े थे, तो मैंने रख दिया। हाँ, नोट बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो what makes a good game? Do you know? एक गुड अच्छा गेम बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? There's something in game जो आपने कोई गेम अच्छे खेले होंगे, वो क्या अच्छा होता है उसमें? Do you know what a good game is? सर, गुड गेम होता है जहाँ जैसे एक अच्छा गेम, जैसे एक पॉपुलर गेम जो बहुत सारे लोग खेलते हैं और उनको पसंद आ जाता है। जैसे हम्म। एग्जाम्पल है रोब्लॉक्स। हम्म। मिलियंस ऑफ पीपल खेलते हैं रोब्लॉक्स, उनको मजा आता है। और लोग और उसमें भी लोग गेम अपना बना सकते हैं रोब्लॉक्स में। हम्म। इसलिए एक चीज इसके लिए भी पॉपुलर है रोब्लॉक्स, कि लोग हम्म। अपने बना सकते हैं। तो लोग उस बिल्कुल। तो उसमें भी लोग गेम बनाते हैं। फिर जो लोग खेल भी सकते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स होते हैं जो लोग प्रेफर करें, इसलिए ये भी पॉपुलर है। डिफरेंट टाइप ऑफ गेम जैसे फाइटिंग गेम, जो भी आपको पसंद है गेम, ऐसे ये इसलिए पॉपुलर है रोब्लॉक्स। बिल्कुल। नहीं, अच्छा, मैं जो पूछना चाहता ना कि एक विद इन Roblox, let's say, what are the characteristics of a good game? Like what's in a game? Like within Roblox, there are multiple games, right?
तो क्या होता है उस गेम में जो आपको कोई, लेट्स से देयर आर 5 गेम्स विद इन रोब्लॉक्स, आपको कोई एक गेम ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर गेम, सो व्हाट मेक्स अ गेम गुड और मोर, सो सर गेम, जी शायद उसके जैसे ग्राफिक्स या कुछ जिससे हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स से क्योंकि वी हैव only like 45 more minutes and we have to work on a game too, so let's talk about maybe when I write it down, आप लोग भी write it down करें कहीं, so because these will be the characteristics of your game जिसमें आपको अपना गेम डिजाइन करना होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस करेगा अपने गेम को, जो जो भी आप गेम बना रहे हैं ना या खेलेंगे अभी जाके, आप जब ये नोट करेगा कि सारे गेम जो आप खेलते हैं इवन ऑन रोब्लॉक्स, कि हर गेम में कोई कैरेक्टर होता है। व्हाट इज अ कैरेक्टर? कोई प्लेयर होता है, जैसे प्लेयर होता है ना जिसको यूज करते हैं, आप खेल रहे होते हैं, अम, जो ऑन स्क्रीन पे ऑन प्लेयर ऑन ऑन स्क्रीन क्या कहेंगे आप, जिसको like the person who's playing the game, ठीक है, मेन कैरेक्टर बेसिकली। और क्या होता है? ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट क्या होता है गेम में? लाइक समथिंग समथिंग दैट प्लेयर इंटरैक्ट, oh I missed something, what is this, I missed E, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, or it could be one object, it could be many objects in the game, सही है, so I can write like this. Same with characters, there could be one character, there could be multiple characters, ठीक है। और क्या होता है गेम में? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होते हैं कि भाई these are the verbs in the mechanics that I oh mechanics, सर these, जी जैसे गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जैसे एक प्लेयर है, अब प्लेयर की डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स बना सकते हैं, तो लोग गेम को खेलेंगे, उनको कुछ टाइप ऑफ गेम की करेंसी मिलेंगी, फिर वो स्किन बाय कर सकते हैं ताकि वो गेम को सच में खेलें, फिर वो बाय कर सकते हैं जो चीजें उनको चाहिए, फिर वो ये तो आप सेटिस्फाई। वो बता रहे फीचर्स, मैं आपको गेम के बिल्कुल जब आप बनाने जाते हैं ना, तो आप जब आप यू आर नाउ हसन, यू नीड टू थिंक लाइक अ प्रोग्रामर, समझे? व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट creating game from scratch, now I'm talking about scratch as in English language scratch, not programming language scratch, बिल्कुल शुरू से आप जब गेम बना रहे हैं, अभी पेपर पे बना रहे हैं, सही है, तो आप सोचेंगे कि उसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे, लाइक प्लेयर कौन से होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स हम क्या करेंगे उसके साथ, समझ रहे हैं? मैकेनिक्स क्या होंगे, कैसे वो भागेगा, मूव करेगा, जंप करेगा, क्या करेगा, समझ रहे हैं? फिर आप आएंगे कि रूल्स क्या होंगे गेम्स के, सही है, रूल्स ऑफ द गेम्स, कि भाई पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, हाउ द विनिंग एंड लूजिंग कंडीशन, winning and losing conditions, scoring points, losing points, all the rules you want to define, what's allowed, what's not allowed, right? ये rules। अच्छा, goals, हर गेम में कोई गोल होता है आपका कि you have to achieve some goal, right? What you want
to achieve in a game. सही है? और जब आप प्ले कर रहे होते हैं तो कोई गोल होता है ना, यू आर फाइंडिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल finding a treasure, finding a switch to a secret room. It's switched. सही है? और क्या क्या होता है? कोई एनी आइडियाज? और क्या क्या होता है गेम में? कंट्रोल्स। कंट्रोल कैसे होगा? कीबोर्ड से होगा, माउस से होगा, और जॉयस्टिक से होगा। अच्छा, विद इन उसमें भी होगा कि कीबोर्ड से है तो कैसे होगा? कीबोर्ड में कौन सी की से क्या होगा? लेट्स से लेफ्ट एरो की से क्या होगा? And then you have worlds. I'm just giving you some when you are designing a game right now, you are thinking about making a game. So when you're sitting right now, you're not coding, you're not programming, you're thinking about making a game. ठीक है सर, जब तो आप बात कर रहे थे ना कि हम करेंसी करें, वो जब आप फीचर्स ऐड करेंगे तब की बात है। अभी तो अच्छा, think about worlds in which the game is played. Think about the worlds in which the game is played. Is it like 2D, two-dimensional, or three-dimensional? Will player see it from above or front? See, so many things you have to think about before you actually start programming a game. Does the game have walls or boundaries? Are you guys following? Is making sense or no? जी Now सर, when मैं लिख रहा हूँ। I'm typing all this, आपको ये सारी चीजें अपने जो जो गेम्स खेलते हैं उनमें याद आ रही? जी Like जी all सर। the games you have played so far, all they have characters in it, they have objects in it, they have certain mechanics, they have certain rules that you have to follow, right? They have goals that you have to achieve. They have specific controls जिससे आप गेम खेलते हैं, and they have worlds, and also levels. सही है, उसमें levels भी होते हैं कि difficulty level कह लें, difficulty levels. Like level 1 is easier, level 2 has more goals to achieve, or faster pace, etc. So you have to define all these things before even start making your game. Then atmosphere, like atmosphere आपका game का कैसा होगा? There's so many things. I'm just typing the most common one. Atmosphere का movie like है, कैसा है?
So if you want to make it like a movie, so a good game is like movie. So you want to make it like a story like game, or just simple. Oh, so you want to add sound, simple sounds, or interactive sound and music. Story, like story based. See, you just keep on adding color scheme, graphics. Okay, so these are for a few of the things that I mentioned there, and the list just keep on going. So for starting, I can tell you some of the most common things. Are you guys able to follow? I can paste these in chat as well. Let me do that. सर मैं अभी बस साउंड का लिख रहा हूँ, थोड़ा स्लो राइटर हूँ इसलिए थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख रहा था। मैं कहता कि ये सारी चीजें जो है ना, आपको अपनी गेम में सोचनी पड़ती। तो ये जो सारी चीजें होती हैं जब आप अपने गेम में सोचते हैं पहले, तो जब आप अपना गेम डिजाइन करते हैं ना इनको सोचते हुए, तो जब अच्छा गेम, लाइक आपने नोटिस किया होगा, देयर आर सम गेम, जैसे आप बताए थे कि देयर आर सम गेम्स जो आपका दिल चाहता है बार बार खेलते रहे, बार बार खेलते रहे। हाँ, जी so no matter how difficult it was to make that game, maybe वो गेम बहुत इजीली बन गया हो। हाँ, so the game that you want to play again and again and again and again, that thing is called playability of the game. जैसे सर आप सही कह रहे हैं, ये होते रहता है। जैसे मैं रोब्लॉक्स खेल रहा हूँ तो बहुत देर के लिए 1 घंटा हो जाता है, मैं थक जाता हूँ, मैं कहता हूँ अब बस थक गया, यूट्यूब देख लेता हूँ थोड़ा। सही है। ठीक फिर है। जैसे ही मैं बंद करता हूँ रोब्लॉक्स को, हम्म मुझे और फिर यूट्यूब लोड करता हूँ, फिर मुझे दिल चाहता है अरे मैं फिर ये भी कर सकता हूँ, ये हो सकता है, क्या होएगा। फिर मैं वापस ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको ये जो सारे पॉइंट्स बताएं, उनका रीजन ये है कि वी वांट टू डिजाइन अ गेम जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपने कंसिडर करने कि कैरेक्टर कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, आपने बेसिकली डिजाइन करना है बाकायदा। सही है। उसको राइट डाउन करें मेरा कैरेक्टर, आपने बेसिकली एक डॉक्यूमेंट जैसे होता है ना, एक वर्ड्स पे या कहीं भी, कि मेरे कैरेक्टर्स ये होगा, उसका नाम ये होगा, मेरे ऑब्जेक्ट ये होगा, मैं मैकेनिक्स ये होगा, राइटर लेफ्ट इन इट। इट हैज टू बी वेरी सिंपल। कोई जरूरी नहीं कि आप यू आर मेकिंग अ 3D गेम, 2D बनाएं जो स्क्रैच पे बना रहे हो, कंट्रोल्स की बोर्ड से हो, माउस से हो, दैट्स वर्ल्ड भी सिंपल से हो। हमने जो स्क्रैच पे गेम बनाया उसी में ही रहते हुए हम बनाएंगे। डिफिकल्टी लेवल, एटमॉस्फेयर, स्टोरी लगानी है, कुछ सिंपल रखना है, साउंड डालनी है, सिंपल साउंड, स्टोरी रखनी नहीं रखनी, कलर स्कीम आपने कुछ रखनी है, ग्राफिक्स ऐड करने, और इन सब को रखते हुए आपने प्लेएबिलिटी ऑफ द गेम हाई रखनी है। द हायर हायर द playability, the better the game. Okay. Okay, so the challenge is on then. नोट कर लिया सबने? नहीं सर, होने वाला है, 1 सेकंड। ओके। सब सब सारी चीजें नोट करने के बाद ईच ऑफ दीज पॉइंट्स विल मेजर, लाइक विल सी के किसने कैसे ग्राफिक्स यूज किए हैं, सब चीजों के पॉइंट्स हम रखेंगे। ठीक है।
आपका जो गेम देखेंगे ना, जिसने बनाया कि भाई ग्राफिक्स कैसे यूज किए हैं, वो किए हैं, सब किए हैं, अच्छा है वो सब। और और विल सी के प्लेएबिलिटी किसकी सबसे अच्छी है, whose game is more with the highest playability. So remember, जब भी आप गेम बनाएंगे these things, अच्छा ये again they are just most common one, there are many points just to start with. अब ये भी बहुत सारे हैं I know, but just to start with, these are some of the many points that you need to consider. But the bottom line is, the bottom line, playability. Is the most important. No matter you make in Roblox, no matter you make in other programming languages, uh, like C Sharp, there are many languages, Python, C Sharp, Scratch, uh, or like Roblox maybe game bante. By the way, I will try to arrange a program where we start making games in Roblox. You can make games in Roblox too. Do you know this? यस मैंने एक बनाई हुई है, मगर बस सिंपल गेम है। जो भी ज्वाइन करते हैं रोब्लॉक्स में ना, उनके पास एक गेम ऑलरेडी बना हुआ होता है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। बस अच्छा लगता है गेम खेलना जी, ऐसा मतलब तो। प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक स्क्रैच है ना ये, तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है लुआ। we'll see in other course, but right now we're using scratch. Okay, so if you अगर आपने नोट डाउन कर लिए पॉइंट्स, जी जी हम हो गए। हमने आज का फिर अपना गेम शुरू करना है, ठीक है? वी आर मूविंग ऑन टू आवर क्लास। अगर नोट डाउन कर लिया ठीक है, वरना मैं इसका आपको वो भी भेज देता हूँ, उसको चैट में भी भेज देता हूँ, where we can send. Oh, कहाँ से भेजेंगे? Oh, इधर है। I moved this whole thing down so I can see you guys. Okay, where is the chat? I don't see chat option. Don't know why. Maybe I can send in the WhatsApp group. I sent in the WhatsApp group. Okay, so हमारा आज का project है जिस we are calling it catch game. So अगर हम अपनी वही spreadsheet now, like we just did a notepad. So सर इसमें आप जी फिर से बोल सकते हैं, मैंने सही से नहीं सुना। क्या था क्या चीज जो आप कि हम नाम ना ठीक है, नाम। हम इसी शीट को यूज करते हैं आज हमने बनाई ना, ठीक है? तो हमारे गेम का नाम क्या है आज के, हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है? तो हमारे गेम का नेम है कैच गेम, ठीक है? Characters क्या, प्लेयर क्या है, अ, इसमें है प्लेयर हमारा वो, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, एप्पल्स, ठीक है? मैकेनिक्स क्या है, एप्पल्स falling down from the bottom. Rules of the game. Rules can be multiple, right? So there are two types of apple, red and green. Falling from top to bottom. User can player
player can move ball using keyboard arrow keys left and right. Move ball left or right using keyboard arrow keys left. Ball cannot move up or down. Okay. User player needs to catch apple into the ball by bringing ball in line with one apple. The red apple will give 1 point. The green apple will give 2 points. If the score become 20, the game will end with you win message. See, these are the rules. Okay. Catch the apples in the bowl. Keyboard left and right arrow keys. World we'll be using. So I already thought about it. So I'll be using this beach deck. It's called beach deck. Something like this. I will see. Difficulty level 1 only. In this, we don't have any story. No, simple. Sound, simple sounds. No interactive sound or music. Storyboards, no. Color scheme, simple. Graphics, simple. Okay, we have our sheets filled. ठीक है? So this is one of the most important thing because इसकी बेस पे हमारा गेम बनेगा. ठीक है, स्टार्ट करें फिर. तो हमें अपना गेम स्टार्ट करना है. हमारा गेम का नाम क्या है? तो देखिए ये होता है गेम डिजाइन बेसिकली. तो हमने पहले गेम पे जाने से पहले दिस इज बेसिकली इंजीनियरिंग. इंजीनियर जो होते हैं वो पहले चीज डिजाइन करते हैं ऑन पेपर्स. दे डोंट जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग एनीथिंग ऑल ऑफ अ सडन. कभी आपने देखा इंजीनियर स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग बनाना और फिर उसके बाद क्या, ओह वी फॉरगॉट अबाउट दिस. नो, पहले वो पेपर पे बनाते हैं, फिर पहले पूरा डिजाइन फाइनलाइज करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, पीयर से, अपने फ्रेंड से और अदर कॉलीग से रिव्यू कराते हैं. देन दे एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग इट वंस द डिजाइन इज फाइनलाइज. सो इसी तरह अब हमने ये देख लिया, हमने एक डिजाइन बनाया, मे बी वी रिव्यू with each other and then we actually finalize the design, then we start building it. Okay, so we are ready. So let's create our project. I'm moving this design to other screen so I can see it.
ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है। इसका नाम हमने क्या रखा है? कैच गेम। ओके तो फर्स्ट हमने अपने कैरेक्टर क्या रखना है? हमने सबसे पहले ऐड करना है एक बॉल। We added a ball. We place it in the bottom here. ओके क्या ऐड हो गया? तो बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, पहले पहले एप्पल ऐड कर देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। if I think this way। एप्पल तो ये रहा, एप्पल। did I add? oh yes, एप्पल ऐड हो गया। इसको हम यहाँ ऊपर कर देते हैं एप्पल। और इसको हमने क्या करना है? हमने इसको क्या करना है ऊपर से व्हेन क्लिक। अच्छा अब मैं जरा क्विकली जा रहा हूँ, हमारे पास टाइम अब 20 मिनट्स रह गए ना, तब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करूंगा। होपफुली नाउ यू गाइज ऑलरेडी नो what these control means, okay? So if you have any question, you please ask maybe in the chat, or we can go over once we are done. Okay, go over, go to so let's see what happens. Okay, go to random position and we go to this, and again I'm repeating this. Y and X means, like in mathematics, X is left to right and Y is up and down. Okay, just repeating. तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया? हमने एप्पल ऐड किया एज आवर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट्स क्या थे? एप्पल्स। तो अभी हमने रेड एप्पल ऐड किया, ग्रीन हम ऐड करेंगे लेटर। अभी हमने रेड एप्पल ऐड किया है और उसको रैंडम पोजीशन पे भेज दिया है। ठीक है, दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज फॉलिंग डाउन। तो अब फॉलिंग डाउन का हम कोड ऐड करते हैं, और दैट फॉलिंग डाउन हमें एक फॉर एवर लूप में एंटर करना है ताकि वो गिरता रहे, क्योंकि ये हमारे गेम का पार्ट है। Okay, so forever loop के लिए, if you remember what we did was control forever, और forever loop किसके बाद आएगा? इसके बाद आएगा, जैसे ही क्लिक हो तो forever होता रहे। और बेसिकली क्या करेगा कि forever, और हमने इसको क्या करना है? मूव बेसिकली क्या होता है कि ये पोजीशन चेंज कर होता है। We are telling computer to pick it from this position, put it here. Pick it from this position, put it here. Pick it from this position, put it here. And when it's running in a forever loop, तो हमें लगता है ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें मैं ये करता हूँ। तो मूव करने के लिए क्या होता है? हम कहेंगे चेंज पोजीशन। चेंज पोजीशन, चेंज पोजीशन कहाँ है? चेंज पोजीशन, I have to search for it. Okay. Change x, y, but we need to go y by -5 minus, because we have to come down. So अच्छा ये देखें अभी क्या होता है। Ooh, लेकिन ये यहाँ जाके रुक गया और अब कुछ नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है कि जब ये यहाँ कहीं आए तो वापस से ऊपर चला जाए, ताकि इट कीप ऑन गोइंग। हमें ऐसा करना है कि अब हमें ये करना है कि अगर, और इफ इट रीचेस समवेयर हियर, इट गोज बैक अप। तो इफ का वर्ड आ रहा है तो मींस हमें इफ की कंडीशन लगानी। तो इफ कहाँ लगाएंगे? इफ इफ वाई पोजीशन, क्योंकि डाउन अप एंड डाउन की, तो इफ वाई पोजीशन, ये पोजीशन क्या है?
समवेयर अराउंड 196 है ना। तो हम कहते हैं कि अगर एप्पल की पोजीशन या यहाँ पे कहीं हो ना, अराउंड 170 के करीब हो, तो वापस उससे ऊपर चला जाए, क्योंकि हमारा बॉल भी तो होगा ना। तो इफ वाई पोजीशन if y position well, first we have to put operator less than y position less than minus 170, then what you should it should do this. Now see what's happening. So it go from up to down, and then it go to random position and start falling from another position. Okay. Now the third step, हमें अपना बॉल ऐड करना है और उसको मूव कराना है. To stop it right here, we need to add our ball. Where is our ball? सर जी. मैंने पूरा कोड कॉपी किया है। पहले तो व्हेन फ्लैग क्लिक, फिर उसके नीचे फॉरएवर, फिर चेंज y बाय -5, फिर इफ कभी है y पोजीशन, फिर -170, फिर गो टू रैंडम पोजीशन, सेट y टू 180। ये जो सारे आपने किए हैं, ये मैंने पूरा कॉपी किया है, मगर मेरा जो है ना, पता नहीं क्यों ये एक एक ये जो टॉप है ना, बिल्कुल वहां पे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट किया है। जैसे मैंने ऐड किया ना, जैसे ही मैंने ऐड किया, इफ मैं गो टू रैंडम पोजीशन और सेट y टू 180 दोनों को डाला साथ, तो फिर ये हो गया, तो ये हो गया। पहले इसमें हम कोई देखते हैं अभी, क्योंकि अभी हमारे पास ये जल्दी जल्दी करना है ना, तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूं, फिर आपका चेक करते हैं. ठीक है, तो अब हमने पहले ये बॉल ऐड कर दिया. अब हमने पहले मैं देख लूं ये बॉल से कितना एप्पल इससे नीचे जा रहा है ना. थोड़ा सा बॉल और नीचे कर देता हूँ मैं. सही. ठीक है, अब मुझे इसको करना है लेफ्ट और राइट. सो इसको भी हमने स्टार्ट करना है. मैं आपको देखता हूँ हसन, मुझे ये है कि पहले हम ये कंप्लीट कर लें, फिर इसको चेक करते हैं. ठीक है, इसको भी हम फॉर एवर लूप में हमने करना है, ताकि जब तक हम ये गेम चल रहा है. ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि सारे गेम जो है फॉर एवर लूप में चल रहा था, कि एवरीथिंग कम्स इन वन सिंगल लूप, क्योंकि गेम इज इन everything inside a game is running in one forever loop. कभी आप नोटिस करेगा, everything happening inside one forever loop. Okay, if inside that forever loop, if क्या हो, हम अगर लेफ्ट की प्रेस करें, if कंट्रोल्स में होगा वो, या कीज है ना, if left right arrow key is pressed, then change x by and motion change x by. ये सब तो अब आपको समझ आ गया ना, कि हम की प्रेस करें तो चेंज x by 10. और अगर if के साथ ये करना हो कि if, दूसरा if ये है कि if दूसरी की प्रेस हो,
कंट्रोल में if this key is pressed, if left key is pressed, then change x by -10. Basically, minus means the opposite direction. So we can see, but nothing is happening right now. But we are able to move. ठीक है, हमारे पास ये कोड भी ऐड हो गया. और हम एक चीज ये भी करते हैं, अब हम थोड़ा सा एक बहुत ब्लैंड लग रहा है ना, हम कोई बैकड्रॉप भी ऐड कर देते हैं. हाँ, बैकड्रॉप ही ऐड कर देते हैं, ब्रॉड. क्या अच्छा है ना बैकड्रॉप. और इसको जो है हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अपने बॉल को स्टॉप, और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. इससे होगा कि जैसे ही ये मैच करेगा ना, तो हम उसको ऊपर कर देंगे, तो इससे पता लगेगा कि मैच कर. ओके, तो अब ये हो गया. अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज, अब हमने इसको कोड करना है कि कैच करे. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम एप्पल वाले में आएंगे. एप्पल को हमने कोड करना है कि कैच कैसे करना है. ठीक है. ओके, forever change, forever change by आपने करना है when forever if तो it is falling down. और ये साइड पे ये भी चेक हो रहा होगा कि अगर किसी टाइम पे apple touches the ball, so when apple touches the ball, if तो इसमें आप प्ले साउंड कर सकते हैं, जैसे मैं पॉप साउंड प्ले कर देता हूँ, प्ले साउंड. And go to random position, set y to 180. Let's see, do you see? So when it's not in the ball, it's going more down. Okay, तो ये ऐड हो गया. अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है.
तो इसको ऐड करने के लिए आपको याद है हमने क्या करना है। इस कोड के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, वेरिएबल्स में। मेक अ वेरिएबल स्कोर, ओके, और हमने ये कर दिया स्कोर। अच्छा जी हाँ। और इसको क्या करना है, दिस ब्लॉक सेट्स द बॉस सेट स्कोर टू 0। और जैसे ही ये वो करे ना, प्ले साउंड हो और स्कोर पर जाए, चेंज आएगा, चेंज, सॉरी, चेंज स्कोर बाय 1। ठीक है, अब प्ले करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। See, score is increasing and sound also coming. Great. चलो भैया, बोनस पॉइंट, बोनस वाला हमने क्या कहा था कि ग्रीन एप्पल होगा, तो हम एक और ऐड करते हैं। तो लेट्स से हम कर देते हैं इसको, डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज एप्पल डुप्लीकेट, एंड इसको हम क्या करें, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कलर, पिल, लेट्स सी। ठीक है, अब हमने एक ग्रीन एप्पल बना लिया। इसी हमने एक एग्जिस्टिंग चीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, और ये हमने क्योंकि वो किया है, डुप्लीकेट किया, तो इसका कोड भी डुप्लीकेट हो गया, आप ये देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या, कि जब ये हिट करेगा तो हम इसका स्कोर जो है ग्रीन एप्पल पे चेंज बाय, लेट्स से चेंज बाय कर देते हैं 2। सही है। अब देख, अब ये देखें, इससे 1 पॉइंट मिल रहा है। अब ग्रीन एप्पल को करते हैं तो स्मूथ, इससे 1 पॉइंट मिल रहा है, 8, इससे 10, 12। सी, the green apple is giving me more points, red apple is giving me 1 point, green apple is giving me 2 points। See, तो सर कोई ऑप्शन है कि ग्रीन एप्पल को थोड़ा वो लेस आए, थोड़ा वो लेस आए ग्रीन एप्पल, हाँ, तो क्योंकि ये तो अब वही वाली बात है, हसन, ये आपके गोल्स में आप एंटर कर सकते हैं अभी, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने अभी जल्दी में, हमारे पास ऑब्वियसली 2 मिनट्स रह गए क्लास में, तो हम, मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप गेम कर सकते हैं। बिल्कुल वेरी वैलिड पॉइंट है कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं ये ऑप्शन, कि भाई ये कम आए, हर वक्त ना आए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि अभी तो मैंने आपको जल्दी में दिखाया, तो यकीनन अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए, 2 मिनट्स रह गए, तो अभी हम बाद में, कभी आप अपने लिए एज ए असाइनमेंट इसमें रिसर्च करके देखें कि क्या कर सकते हैं। तो अभी हम ये करते हैं कि हम ये इसको विनिंग कंडीशन ऐड कर देते हैं। ओके, हम ये करते हैं, विनिंग कंडीशन कहीं भी ऐड कर देते हैं।
ओके, टेक्स्ट टूल है ना मेरे पास कहीं भी क्वेश्चन में, इधर या यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस पे करते हैं टेक्स्ट और लिखते हैं जल्दी से, कहाँ पे है टेक्स्ट, यू विन। इसको कलर हम रखते हैं, लेट्स से with साइज किधर है, और इसको हम कर देते हैं when this click looks high until wait until it until for operator something equal to my score equal to, let's say 30, and then looks show and then control, and then it says stop all. Okay, let's see. Okay, we are playing our game, and let's see if it works. All green apple should give us 2 points. 14. Oh, where'd the red apple go? I don't know where the red apple. I think it is hidden. Maybe I did something wrong. Maybe I should do something differently. सर मेरे ख्याल में जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, यू विन। हाँ, वो उससे उसमें कर दिया उसने मेरा ख्याल। मैं इसको करता हूँ ऐड
Choose a bag. We can do at some other, this, we can use this code at other as well. Okay. We can copy it. Oh, okay, this is where I should be writing. I did this wrong. Uh, see, that's why it's good to review. And this is where I should be writing. I should be writing you win. And we can make it like you win message. And I can make it, can I make it a little bigger? Yeah. Okay. And I can come up here and copy the code here and delete from here. Okay, let's start. Uwin is coming down to, oh, we did not remove it from here. It's not removed from here. So we have to remove from here. Why it's still here? You have to remove from the costume from here. It is still. Huh? I did remove it. Save now. Why is not deleting? Okay, so
We are doing it. And okay, it did not stop. So yeah, so now we will have to what we call it debugging. See, so it supposedly should have stopped, but it did not. And now we will debug that why it's not. Technically, it should stop. So let's say we do this, maybe it's a copy paste is the issue. So let's try. Sometimes we do is we do things from scratch, it loads hide, hide, and then if I don't hide it, is it showing? Not even showing. Huh? Where it are? Oh, this is here. And this motion height. We can try one more time, then maybe we can debug later, and I'll share the code later once I fix it. This is strange. Why it's not working? It happens all the time in programming. और यही हमारी जॉब है. अगर आपने ये प्रोफेशन चूज किया तो आपको इस तरह की सिचुएशन अक्सर हैंडल करनी पड़ेगी कि व्हेन यू सी थिंग्स हैपनिंग वन टाइम एंड द अदर टाइम ऐसे ओह व्हाट हैपेंड. Oh, it worked. See,
So our code work again, आपने अभी खुद एक्सपीरियंस किया कि this was the same code before we just copy pasted it. Scratch didn't read it, so all I had to do is just delete it and just manually add it again, and it worked. So maybe जब मैंने copy paste किया तो Scratch के जो compiler होता है ना, जो उसको read करता है, उसको code को translate करता है from human language to computer language, उसने read नहीं किया शायद। तब आप देख सकते हैं हमारा जो कोड था, we went through all our design aspect here. We added our character, objects, the mechanics, the rules. अगर देखें तो apples are falling, red and green falling from top to bottom. बॉल जो है हमारा लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है, अप एंड डाउन नहीं मूव कर सकता। प्लेयर्स को जो है कैच करने, और अच्छा हमने स्कोर का थोड़ा सा रूल ब्रेक कर दिया, हमने फॉलो नहीं किया। तो अब या तो अब रूल अपने गेम में सेट करें या यहाँ पे चेंज करें। अभी मैं यहाँ कर देता हूँ, लेकिन गेम की विन कंडीशन 20 थी, मैंने वहाँ 30 कर दी। इट्स माय मिस्टेक। लेकिन ये कि either one of them needs to change, either गेम में चेंज करें या यहाँ चेंज करें। तो मैंने अभी यहाँ चेंज कर दिया। ग्रीन एप्पल जो है 2 पॉइंट दे रहे हैं, रेड एप्पल 1 पॉइंट दे रहे हैं। गोल क्या है, कैच कर रहे हैं, कीबोर्ड से लेफ्ट राइट एरो की हो रही है। बीच डेक हमने यूज किया है, एक ही लेवल है, सिंपल है, साउंड सिंपल साउंड है, नो स्टोरी। ठीक है। प्लेएबिलिटी ऑफ द गेम, क्या रेट करेंगे इस गेम की प्लेएबिलिटी? एनी रेट? मेरे हिसाब से तो सर 1 to 10 में 1 through 10 7.5 7.5। ओके अली, कोई अली आप बताएंगे कोई इसकी प्लेएबिलिटी? चने में खलाली मौजूद नहीं है। ओ कोई बात नहीं, मैं जो हूँ, मैं अगर कहूँ तो इसकी प्लेएबिलिटी 5 बट स्टिल वी आर लर्निंग हियर। तो आज का सेशन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो प्लीज़ इसको वॉच करेगा, जाके दोबारा गौर करेगा कि गेम बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। तो नेक्स्ट वीक कम ऑफ मतलब मुझे गेम सेंड करें बना के, मैं क्लास ऐसे नहीं होगी, बट विल लुक एट योर गेम बेस्ड ऑन द पॉइंट्स दैट मैंने आपको शेयर किए। ठीक है। सर आपने बताया था एक कंपटीशन डे होएगा, आप एग्जैक्ट डेट फिर से बता सकते हैं? मैं नेक्स्ट वीक आप मुझे बता दें, आप बना के भेजें बस नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि अब फिर स्कूल खुल जाएंगे ना। तो एक आप, मैं आपको चले ऐसा कहते हैं मैसेज पे बता, क्योंकि अब ज्यादातर लोग जो हैं वो ड्रॉप कर गए कॉल से। तो अब मैं बताऊंगा तो सब सुनेंगे नहीं, तो मैं मैसेज पे बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है ये सारे रूल्स हैं, और गेम्स को फॉलो करते हुए आपने जो है वो सेंड करना है। ठीक है चलो फिर। सर।